नमस्कार दर्शकों, मैं संतोष कुहीकर आप सभी का किड्स इंटेलिजेंस इस संस्था की तरफ से आज के इस विशेष मुलाकात में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों में बौद्धिक विकास करने तथा उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में किड्स इंटेलिजेंस संस्था का विशेष योगदान रहा है। इस संस्था की शुरुआत 2009 में श्रीमती शुभदा भावे इन्होंने मुंबई से की थी। किड्स इंटेलिजेंस ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड संस्था है और ISO 9001 2015 से प्रमाणित संस्था है। Abacus Vedic Mathematics ऐसे विषयों को पढ़ाकर संस्था बच्चों के जीवन में अमूल्य योगदान दे रही है। पिछले 12 साल से 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर Abacus और वैदिक मैथ शिक्षा को हासिल किया है। 20 एक्सपर्ट्स इन हाउस टीचर्स की टीम अलग अलग 13 देशों में बच्चों को इन विषयों को सीखने में मदद कर रही है। यह संस्था बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करने के लिए ट्रेन द टीचर्स का कार्यक्रम चलाती है। दोस्तों, आज इन 12 सालों में किड्स इंटेलिजेंस से हजारों से अधिक माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार की तरह जुड़ चुके हैं। मित्रों, हर साल किड्स इंटेलिजेंस अपने होनहार विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को सम्मानित करने के लिए एक थीम चलाते हैं जिसका नाम है सुपर हीरो फेम शो। ये एक अनोखा शो है जहां पर बच्चों की मेहनत को नवाजा जाता है, उन्हें एक मंच दिया जाता है अपनी शिक्षा की सफलताओं को दूसरों के साथ बांट सके। सुपर हीरो फेम शो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के योगदान को भी सम्मानित करते हैं। दुर्भाग्य से पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के चलते शिक्षा का माध्यम पूरी तरीके से बदल गया। एज वी ऑल नो कि अभी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई। जो बच्चे पहले ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अब उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना पड़ा। शुरुआत में यह बदलाव सभी के लिए बड़ा ही मुश्किल था। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिताओं को भी कई दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। कभी डिवाइस नहीं था, कभी डिवाइस था तो उसे किस तरीके से ऑपरेट करे उसकी जानकारी नहीं थी, कभी नेटवर्क नहीं था तो एग्जाम कैसे दें इसकी भी चिंता सताती थी, और ऐसी कई अन्य चुनौतियां भी उनके सामने थी। लेकिन ऐसी कई अन्य चुनौतियों के बावजूद किड्स इंटेलिजेंस ने ही नहीं तो विद्यार्थियों ने और उनके माता पिताओं ने अपने बच्चे की शिक्षा की सफलता को हासिल किया है। उन सभी बच्चों का और उनके माता पिताओं का किड्स इंटेलिजेंस की तरफ से आज के सुपर हीरो फेम शो में हम शत अभिनंदन करते हैं। आज उन्हीं में से एक होनहार बच्चे से हम मिलने जा रहे हैं, उनके साथ उनकी माता जी भी हैं। तो आइए मिलते हैं आज के सुपर हीरो फेम शो के मंच पे नाव्या जी और उनके सुपुत्र निवृत्त को। इनके बारे में बताना चाहूंगा कि नाव्या जी और निवृत्त इस वक्त हमसे आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हम सबकी ओर से नाव्या जी और निवृत्त दोनों का आज के इस सुपर हीरो फेम शो के मंच पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। नाव्या जी एंड निवृत्त, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस शो पर। थैंक यू। कैन वी स्टार्ट? श्योर सर। यस सर। सो नाव्या जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? It's a very happy feeling and I'm also proud to, proud of my son. To be on a super hero thing. Okay, my next question, Navya ji, for you is that I would like to know from you, where did you come to know about kids intelligence? Kids intelligence की जानकारी आपको कहाँ से मिली? Through my friend who is working as a teacher in your kids intelligence. Her name is Divyashree. She came to me about this. Okay. Initially, I don't know anything about kids intelligence, but I basically thought I just wanted to give it a try. Okay. And later on, I've seen a lot of improvement in in his
concentration and ability skills and everything. So I wanted to continue it. यानी कि आपको किड्स इंटेलिजेंस की जानकारी आपकी सहेली से मिली थी. Yes. Okay, great. Going ahead, I would like to know which subject did you choose for Nivrith and why? Abacus, sir. Achha, you choose Abacus? Yes, I chose Abacus. Okay. As I said, I just wanted to give it a try. I initially thought he's like a very younger for that, but later on I thought that I was wrong. Okay. So any special reason? I mean, have you heard Abacus ever before that? I just heard about Abacus that it makes kids be confident in doing their maths and everything, but I don't know anything in detail about Abacus. Achha. Further, I would be interested to know about your journey with Nivrith while learning Abacus. Can you please brief us about your experience of learning? Very smooth, I can say, because I have got a very supportive teacher, Divyashree. There are times I couldn't attend the class when we used to travel and everything. She used to be very patient towards the kids, even when he couldn't, match up the pace sometimes. She used to be very patient towards him and supportive. Okay, so you said that the teacher was very supportive, right? Yes. Okay. So I just wanted to know how about your journey. I mean, when Nivrith was learning the Abacus, how was the day, and what kind of a readiness that you have to make while his class was starting? That is what, like, it was a very smooth journey because I got a very supportive teacher and a very quick learner kid with me. Okay. So to be frank, I didn't have much of a struggle. I didn't have that phase. Okay. As I got these two, this quick learning kid and a very supportive teacher with me. Right. Understood. So I wanted to know from Nivrith. Nivrith, are you there? No? Can you hear me? Hi, Nivrith. I wanted to know what is the name of your teacher? Divya Bhaskar, sir. Acha. Okay, wonderful. What are the qualities of a teacher from kids' intelligence you observed during the learning experience? Yeah, patience. It comes first when dealing with the kids, right? So patience is the first thing. Okay. And handling the classes. When we couldn't attend during our session, she used to make sure that we get our class in once in a week. She used to schedule it accordingly. Okay. Which is a nice thing. Achha. So she was very supportive, right? Right. Okay. And how about the teachings? Yeah, it is easy to understand, sir. Achha. She makes sure that he get the topic completely. Okay. So actually she makes sure that the students should understand the topic properly and very easily, right? Yes. Okay. Navya ji, going ahead, I would like to know, during the learning of Abacus, what are the changes that you observed in Nivrith? Changes means I could see a lot of difference in his mental ability in doing maths. Okay. He actually started doing mental maths even for the bigger numbers. Wonderful. Okay. Yeah. Wonderful, Nivrith. Very good. In fact, he's a class 2 student, but when I give some, recently I've tried something like I gave him 3rd grade book, maths book, and asked him to do it, but he did it with ease. He didn't feel any difficulty in doing the problems and all. So now he is doing it very well? Yes, very good. You are very happy with his progress? Yes, very much. Okay, and what about Nivrith? Nivrith, are you happy with the learning of Abacus? Yes, sir.
Oh, wow, great. That's wonderful thing. Further, going ahead, my question is related to the online learning. As we all know, since last 2 years of pandemic, the pattern of studies went online from offline. So how difficult it was for you? What changes did you face in online learning and how did you manage them? The major issue is like we used to be traveling sometime. Okay, So the major difficulty is like the with the connectivity issues, as okay. we are all aware of it. So I couldn't, balance in studying with the network issues and everything. Yes, agreed. But how did you manage this? It's a very tough thing, but basically he's also a supportive kid for me. So you could be able to manage this and you would be able to, complete this Abacus program successfully. Yes. Okay, Actually, there was an incident. We were traveling once during that, class time. okay, But I used to make sure that though we were in the car or anywhere, I used to make sure that I connect to the, Zoom call and I make sure he attends the class in any okay. situation. Wow, that's great thing. So Yeah. nice of you. So you are also taking the care of Nivrith. Yes. So I think, along with Nivrith, you were also struggling and you were also, getting the things to done with Nivrith. How was your experience while learning Abacus? Nice, sir. Nice? It was great. Arey wow, wonderful. It was great, right? Yes, sir. Wow. Okay, wonderful. Navya, while we are moving to the conclusion, I would like to know from you, would you like to give any message to our viewers from this platform of Superhero Fame Show? I recommend everyone to learn to teach their kids this abacus, which I personally have seen a great difference in my kid. Okay. Like before learning abacus and after learning abacus, though he's in level 2 actually, but he Right. can, solve the next level questions in the maths. Wow. He started doing mental math, and I can see a lot of confidence in him. Acha. Any big kind of like big number, which is like thousands number, which is a big number for him for his age, he can do it very easily. Wow. Wonderful. Yeah. This is a very good thing. I recommend everyone this kids intelligence program because you have got very nice cooperative and supportive teachers Okay. who plays a key role. Wow. Great. Yeah. Okay. So Navya is recommending kids intelligence to everyone, as she has experienced, a great change in the life of her son. Yes. Okay. Thank you once again, Navya and Nivrith. Nivrith, and all the best to you for your future journey. Thank you. ओके, तो दर्शकों, ये थी नाव्या जी और उनके सुपुत्र निवृत्त, जो कि आंध्र प्रदेश से हमसे जुड़े थे। आपने देखा कि किस तरीके से निवृत्त ने अपने अबैकस की पढ़ाई को किड्स इंटेलिजेंस और उनके टीचर्स के माध्यम से पूरा किया है। इस पढ़ाई से ना ही निवृत्त, लेकिन साथ ही साथ उनकी माताजी भी बेहद खुश हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया है। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से नाव्या जी और निवृत्त का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। दर्शकों, जाते जाते आपसे ये जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से नाव्या जी को किड्स इंटेलिजेंस संस्था के बारे में उनकी सहेली से पता चला, उसी तरह से आज आपको शायद किसी सहेली से नहीं तो इस इंटरव्यू से भी पता चला हो, तो आप जरूर किड्स इंटेलिजेंस इस संस्था में कॉल करें, उनके मार्गदर्शकों के साथ बातें करें, उनको मिलिए, उनके इंट्रोडक्टरी सेशन सुनिए, उनसे अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बातें करें और कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए सूटेबल है उसका पूरी तरह से मार्गदर्शन दें। जिस तरीके से निवृत्त ने अपने
एबैकस की इस स्टडी को हासिल करके अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाए हैं, उसी बदलाव के तहत आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भवितव्य की कामना किड्स इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं और एक दिन आप भी सुपर हीरो फेम शो में जरूर आ सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ हम यहीं पे विदाई लेते हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।